Next question. Consider following information. Information is given in respect of two securities X and Y. Risk is provided 28% और 15% है. Risk of risk-free security is 0. मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न दे रखा है 20%. RF is given 10 and RM is given 20. R, that is correlation coefficient between, so the returns of the security X and Y is provided to us. It is 0.25. As per, highlight the portion, Markowitz Model. What is the expected return for the following investment? तो Markowitz Model के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये पूछा गया है. सिक्योरिटी X में से, सिक्योरिटी Y में से, and from a portfolio consisting of the security X and Y in the ratio of 0.4 and 0.6 respectively. यानी अगर हमने 40% इन्वेस्टमेंट किया है X में और 60% इन्वेस्टमेंट किया है Y में, तो उस केस में रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन. I request all of you to go through the question, please. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग द मार्कोविट्ज मॉडल फ्रॉम सिक्योरिटी X. We know that so the Markowitz model is measuring the risk in terms of standard deviation. तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, expected return is equal to risk-free rate of return plus return on market portfolio minus risk-free rate of return divided by standard deviation of market portfolio into standard deviation of the portfolio. ऐसा यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया जाएगा. Let us have understanding of this formula. Markowitz model का कहना ऐसा है, what is the rate at which you are expecting the return? At least RF के जितना. Risk-free rate of return कितना है, 10%. 20 minus 10 divided by 20. So 10 plus 0.50. Now understand logical. Equation यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म होता है, additional risk and additional return. अगर हम लोग मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, न कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, अगर हम लोग मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं न कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, तो कितना एडिशनल रिस्क है, इट इज सिग्मा M माइनस सिग्मा RF. रिस्क फ्री का तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 ही है. सो एडिशनल रिस्क कितना हुआ, एडिशनल रिस्क हुआ 20 माइनस 0 यानी कि 20%. उसके सामने हमको एडिशनल रिटर्न क्या मिलता है, इट इज RM माइनस RF. सो 20 माइनस 10 यानी 10, यानी कि 20% के एडिशनल रिस्क के ऊपर हमको 10% का एडिशनल रिटर्न मिलता है. सो फॉर 1 यूनिट ऑफ एडिशनल रिस्क दिस इज द एडिशनल रिटर्न. तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा 10 into 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 20. सो इट इज 0.50. ऐसा करके इसको कैलकुलेट किया जाएगा. यानी 1 यूनिट के एडिशनल रिस्क के ऊपर हमको 0.5% का एडिशनल रिटर्न चाहिए, मल्टीप्लाइंग विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. यानी यहां पे क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी X, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी X में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो 10 प्लस 0.5 इंटू 28
सिक्योरिटी एक्स का रिस्क है 28%, एक यूनिट के रिस्क के सामने 0.5% एडिशनल रिटर्न चाहिए। तो 28% के एडिशनल रिस्क के सामने हमको कितना एडिशनल रिटर्न चाहिए? 14% का। 14 को 10 में ऐड करेंगे, सो ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 24% का। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन द आंसर फॉर सिक्योरिटी एक्स। फिर हम लोग वाई का करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी वाई। In that, similar formula would be applied. It is RF plus RM minus RF divided by standard deviation of market portfolio into standard deviation of portfolio. Risk-free rate of return is 10. 20 minus 10 upon 20. Multiplied with the standard deviation of the portfolio. That is standard deviation of the security Y, that is 15%. 10 plus 0.50 into 15. 10 plus 7.5, that is 17.5%. यानी अगर हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन इन दैट केस हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा 17.5%. Friends, if at all you recall, this is nothing else but it is technically given a name as शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में क्या होता है कि एक यूनिट के रिस्क के ऊपर आपको कितना एडिशनल रिटर्न मिलता है। मार्केट में 0.5% मिल रहा है, आपकी सिक्योरिटी का रिस्क 15% है, तो हमको ओवरऑल कितना चाहिए? 17.5%। ऐसा करके हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, I would like you to give answer in the chat box. What is the return of a portfolio consisting of security X and Y in the ratio of 0.4 and 0.6 respectively? तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर हमने ये प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा। I want you to do answer for the third part of the question and put your answer in the chat box. Friends, we know that say if at all the investment is made into securities, then in that case standard deviation of the portfolio is calculated as under root of the variance of the portfolio. So first of all, over here we are required to make the calculation of the variance of the portfolio. So I request you to write an answer for the third question. Working note number 1, calculation of variance of the portfolio. I hope that everybody will recall the formula. It is Wx square sigma x square, Wy square sigma y square, 2r Wx Wy sigma x sigma y. So weight of x is provided to us in the example as 0.40 and weight of y is given as 0.60. I request all of you to write down answer along with me. Into variance of the security X. So it is square of 28, then it is square of 15. 2 into R is 0.25, into weight of X into weight of Y, into standard deviation of X into standard deviation of Y. So square of 0.4 into square of 28, that comes to 125.44.
square of 15 into square of 0.6, that is 81. 2 into 0.25 into 0.4 into 0.6 into 28 into 15, that comes to 50.4. 125.44 plus 50.4 plus 81, 256.84. This is the variance of the portfolio. Based on the variance, we'll make the calculation of the standard deviation. So it is under root of the variance, under root of 256.84, 16.03%. That is the way the standard deviation of the portfolio can be found. Okay. Once we make the computation of the standard deviation, uske baad we'll make the calculation of the again required return from the portfolio. So it is RF plus RM minus RF divided by sigma M into sigma P. The risk-free rate of return is 10. RM is 20, RF is 10, divided by standard deviation of the market portfolio 20 into 16.03. So 10 plus 0.50 into 16.03. 10 plus 8.015. So 18.015. That is the way the required return from the portfolio can be found. Dear students, the required return from the portfolio cannot be calculated as simple weighted average. That is, सिक्योरिटी X और सिक्योरिटी Y का वेटेड एवरेज यहाँ पे नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते सर? उसका रीजन बहुत सिंपल है. In that case, we understand that the standard deviation of the portfolio is not simple weighted average. We are required to take into account कि दोनों के बीच में क्या correlation coefficient है. That is the reason. So we are required to make the calculation of the required return of the portfolio, taking into account standard deviation of the portfolio, और उस हिसाब से हम लोग return of the portfolio का formula लगाएंगे. So small summary of the entire answer. सबसे पहले expected return calculate किया, जिसमें RF plus RM minus RF divided by sigma M into sigma P. ये और कुछ नहीं है, sharp ratio है market portfolio का. उसके ऊपर से required rate of return calculate किया. सिक्योरिटी वाई का सेम वर्किंग, और उसके ऊपर से वी मेक द कैलकुलेशन फॉर द पोर्टफोलियो. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर.